डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गैस पेपर इंग्लिश सेकंड ईयर का, जिसका इम्तिहान होने जा रहा है अभी जस्ट थोड़े ही दिनों में, यानी कि 2020 में। तो बेहतरीन सूरत तो ये है कि आप पूरे का पूरा सिलेबस तैयार करें, लेकिन टाइम चूँकि शॉर्ट है इसलिए जल्दी जल्दी आपको मैं बताने जा रहा हूँ गैस पेपर इंग्लिश का। और ये जो पेपर है ये आल पंजाब बोर्ड्स यानी रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, डीजी खान, बावलपुर और फैसलाबाद बोर्ड्स के लिए वैलिड है। फेडरल बोर्ड के लिए ये पेपर वैलिड नहीं है, गैस पेपर वैलिड नहीं है। तो मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चुने हैं आपके लिए, जो आप तैयार करके इस पेपर में अच्छी तरह नंबर हासिल कर सकते हैं। और ये पोर्शन है गुड बाय मिस्टर चिप्स का, यानी गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नावल है उसमें से ये सवालात मुंतखब किए गए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आपने याद करने हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर की जो वर्डिंग होती है वो आगे पीछे हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि सेम टू सेम यही आए, आ भी सकता है लेकिन इसकी वर्डिंग बदल सकती है। तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि क्वेश्चन की सेंस को समझना है और फिर उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। Who was Merivale and what did he say about Mr. Chips? What kind of Mr. Weatherby was? How did Mr. Chips punish the collie who disturbed the class? When was Brookfield established and what status did it gain afterward? When did Mr. Chips retire from the Brookfield and what was presented to him? What was the condition of the room Mrs. Wickett led to Mr. Chips? What was the condition of Mrs. Wickett's house? तो ये जो दो सवाल हैं बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। पहला जो सवाल है वो मिसेस विकेट का जो मिस्टर चिप्स को उन्होंने रूम दिया था उसके बारे में पूछ रहा है, और दूसरे सवाल में हाउस के बारे में पूछ रहा है। तो रूम अलग चीज़ है, हाउस अलग चीज़ है, तो आपने फ़र्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर चिप्स सर्व हिज गेस्ट स्टूडेंट्स? हु वाज मिसेस विकेट? Who was Collingwood? How did Chips happen to meet with Katherine? What happened with Mr. Chips at Great Gable? What were the views of Mr. Chips about women? What was the physical appearance of Katherine? Write a note on views and ideas of Katherine Bridges. How much popular was Katherine in Brookfield after marriage with Mr. Chips? What changes did Katherine bring in Mr. Chips after marriage? How did Katherine help Mr. Chips in the matter of discipline? What kind of difficulties Chips faced while trying to write a book? Describe Katherine's tragic death. What was the effect of Katherine's death on Mr. Chips? Who was Meldrum? How long did he serve Brookfield? What kind of man Mr. Ralston was? Why did Ralston want to get rid of Mr. Chips? What was the cause of row between Ralston and Mr. Chips? What was the result of the row between Ralston and Chips? ये row का मतलब यहाँ झगड़ा है। Who was Sir John River and why was he in favor of Mr. Chips? Why did Chips decide to get retirement in 1913? When and why did Ralston leave Brookfield? Describe Mr. Chips' speech at farewell party. Describe Mr. Chips' routine after retirement. What were the services provided by Brookfield during the war in 1915? Why did Chatterjee request Mr. Chips to join Brookfield again? What is Resol? What joke did Mr. Chips make about it? When and how did Chatterjee die? Why had Mr. Chips earned the reputation of being a great jester? Write a few lines about Mr. Chips' will. यानी उसकी नसीहत के बारे में, जो उसने वसीयत की थी उसके बारे में चंद लाइनें लिखे। What do you know about Linford? Why did Linford come to visit Mr. Chips? What did Mr. Chips say to Cartwright in the end? When and how did Mr. Chips die? Thank you for watching my video.